Good evening, sir. Good evening, Achi. So the last answer was option C. Last question answer. Last question, the That work power energy. no, that collision one. Yes, it is that open one. Collision one. Let me see. Wait. Let me see only. This one, no? Yes, option C. See one. Today we'll be starting alternating current. हाँ, बाकी लोग आते रहेंगे यार. अब स्टार्ट करते हैं. Now alternating current. See, what is this alternating current? You need to understand first. Actually, the current that we receive, करंट जो हमारे यहाँ आता है ना, मतलब उसमें जो सप्लाई से आता है वो एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट होता है. क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जो डीसी करंट होता है ना, उसको बड़े डिस्टेंस तक भेजना मुश्किल होता है. ठीक है, इट कैन कैरी मोर पावर, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है. अब ऑल्टरनेटिंग करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं? यूजुअली देखो, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे पास जो करंट आता है ना, वो करंट या फिर जो वोल्टेज आता है उसकी एक रेटिंग होती है. जैसे 55 50 हर्ट्ज, 240 वोल्ट मैक्सिमम रेटिंग, इस तरह से करंट आता है. या वोल्टेज, अगर वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज तुम्हारे पास आता है वो 240 वोल्ट होता है. और तुम उसमें भी देखोगे सबकी वोल्टेज भी लिखी हुई होती है. तुम लोग उसमें भी देखोगे कि जो भी डिवाइसेस होते हैं ना, उनकी भी पावर लिखी हुई होती है कि इतने पावर पे काम कर सकता है. अब वो जो पावर जो लिखी होती है, या फिर जो भी तुम्हें सप्लाई दी जाती है करंट की, वो एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से दिया जाता है. जो रियलिटी में जो करंट यूज हो रहा है या फिर जो वोल्टेज यूज हो रहा है, वो ऑल्टरनेटिंग यूज हो रहा है, बिकॉज दिस इज मोर एफिशिएंट. और उसके साथ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. डीसी को उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, क्योंकि देखो, उसको तुम वो लॉस लेस होता है. एक तो सबसे बड़ी चीज ऑल्टरनेटिंग करंट. दूसरा कि इस इन्वर्टर वगैरह में भी तुम अगर देखोगे तो यहाँ पर ना एक बैटरी जो यूज होती है, पहले उसका वो डीसी में इन्वर्टर का जो मेन बॉक्स होता है, उसका काम ये होता है कि बैटरी की जो डीसी पावर, डीसी वोल्टेज को पहले वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, वो जो बॉक्स होता है, फिर तुम्हें सप्लाई करता है. सिमिलरली, अगर बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी पे जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, फिर वो पहले डीसी में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद बैटरी को चार्ज करता है. तो ये है कहानी डीसी और इसकी. डीसी वाले सर्किट्स को आप एसी में यूज नहीं कर सकते, एसी वाले सर्किट्स को आप डीसी में यूज नहीं करते. इनको हम ऑल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग इसलिए कहते हैं, करंट या वोल्टेज वो यूजुअली ऑल्टरनेटिंग साइकिल्स के फॉर्म में होते हैं. आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. मतलब साइन ओमेगा टी में लिखा है, कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, मैटर नहीं करता कुछ.
और I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, डजेंट मैटर, या फिर और V नॉट cos omega t. Because the voltage or current is represented in this way, that's why we say it is alternating. अब ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि जो करंट और वोल्टेज के ये जो तुम्हें दिखा रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट की और वो साइन वेव वाले ग्राफ। तो जब तुम इसके ग्राफ बनाओगे, मैं एक ही हाफ में बना रहा हूँ, पॉजिटिव हाफ में, ये ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ होता है जिसमें अगर मैंने वोल्टेज ड्रॉ किया है, ये वोल्टेज विद टाइम, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ऊपर तक, दिस वैल्यू इज वी नॉट, एंड अगेन फ्रॉम इन डाउनवर्ड्स आल्सो दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज माइनस वी नॉट, दिस इज पॉजिटिव वी नॉट, है ना एम्पलीट्यूड, ये सब तुम लोग जानते हो। इसकी इक्वेशन, क्योंकि तुम लोगों ने अगर 11th का तुम्हें थोड़ा सा वेव के बारे में पता है, वेव इक्वेशंस के बारे में पता है, तो उसमें तुम्हें पता होगा कि इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह वगैरह होती है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t टाइम पीरियड, लैम्डा भी होता है वेवलेंथ, लेकिन के दिया नहीं हुआ है क्योंकि एक्स वेरी नहीं कर रहा है। वेवलेंथ वैसे हमें ये पता है कि बिटवीन सिमिलर डिस्टेंसेस जो पॉइंट्स, जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये सब चीज़ तुम्हें पता है। टी इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ऐसे ही वोल्टेज होता है और ऐसे ही करंट होता है। अब सबसे पहली चीज क्या आती है, एक वार्षिका तो लगता है सो गई थी, अब उसका मैसेज आया। अब ऐसे ही करंट का है, आई करंट आई नॉट मैक्सिमम यहाँ पे होता है, और ये जो मिनिमम है ये मिनिमम माइनस आई नॉट होता है नीचे। अब ये इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की है, इसलिए इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट, मैंने सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट लिखा है क्योंकि तुम एसी करंट के बारे में पढ़ रहे हो, पर वोल्टेज भी ऑल्टरनेटिंग होता है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऊपर वाला है, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी नीचे वाला है। ओके, ठीक है, इजी इजी चीज है। ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं हमेशा। कहाँ गई, गायब हुई फिर से। अब देखो, सबसे पहली जो चीज आती है वो है एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू। देखो बात क्या है ना, ये अब तुम लोगों को डाउट आना चाहिए कि यार ये एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, ये है क्या। बहुत लोगों को डाउट आता है। आर एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है। एवरेज वैल्यू जो होती है ना करंट की या वोल्टेज की, ये क्या होती है कि मतलब देखो, करंट तुम लोग जानते हो कि ये वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से नीचे तक, जीरो से आई नॉट तक जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितने एम्पियर की कितना एम्पियर करंट चल रहा है सर्किट में, उसकी वैल्यू वेरी होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट या सिचुएशंस। अब हमें एवरेज वैल्यू क्यों चाहिए होती है, क्योंकि दिस एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट या फिर वोल्टेज, अगर मैं तुमको पूछूंगा, तुमको बोलूंगा कि भाई करंट कितना आ रहा है, तुम्हारे पास कितना करंट आ रहा है, तो तुम एक वैल्यू तो बताओगे ना। ये थोड़ी ना बोलते रहोगे सर कभी 0 हो जाता है, कभी 5 एम्पियर हो जाता है, कभी 10 एम्पियर हो जाता है, कभी 2 एम्पियर हो जाता है, तो कुछ भी चलता रहता है ना, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे। तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू बतानी पड़ेगी कि सर इतना एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इतना आ रहा है, तो वो वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करके बतानी होती है, जैसे तुम उसमें करते हो ना स्टैटिस्टिक्स वगैरह में। तो वो एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो करंट या वोल्टेज की फॉर द होल
साइकिल, ये साइकिल मतलब 0 से लेके पूरे टाइम पीरियड टी तक, ठीक है। और टी को तुम जानते हो, ये एक्चुअली ये सब चीजें तो तुम जानते ही हो। ये 0 है, ये पाई/2 वाला रेंज है, ये पाई है, ये फिर 3 पाई/2 है, ये 2 पाई है पूरा। और यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा है, ये सब तुम लोग जानते हो। तो एक्चुअली मुझे, हमें जो यूजुअली जो चीजें चाहिए होती हैं, एवरेज वैल्यू, ये पूरी की पूरी टाइम पीरियड तक चीज चाहिए होती है एक साइकिल में। ऐसे ही आरएमएस क्या है, अब जब एवरेज वैल्यू निकाल के दे रहे हैं सर हम चुपचाप, तो हमें आरएमएस वैल्यू की क्या मतलब है। आरएमएस वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट, इट इज रूट मीन स्क्वायर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी वैल्यू को बताते हो ना किसी करंट की रेंज में, तो जब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके केस में क्या होता है कि एवरेज कुछ चल रहा है, मतलब नॉर्मली अपन यूज कुछ कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू जो कैलकुलेट है वो क्या आ रही है, वो कुछ और चल रही है। तो इसीलिए हम एक्चुअली जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट देते हैं ना, जो एवरेज से भी ज्यादा स्पेसिफिक और एक्यूरेट वैल्यू होती है, वो होती है आरएमएस वैल्यू। यूजुअली हम जब भी रेटिंग्स डिफाइन करते हैं किसी भी चीज, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिफाइन करते हैं। रूट मीन स्क्वायर इज रूट फिर मीन फिर स्क्वायर। ये समझ में आ जाएगा तुम्हें, मतलब अभी के लिए ये जान लो कि इट इज मोर एक्यूरेट। तो यूजुअली ये चीज यूज होती है, ठीक है। अब करते हैं एवरेज वैल्यू, ये सब निकालते कैसे। आई एवरेज, क्या हो गया मेरा हाथ क्यों खड़ा। आई एवरेज जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल मॉड्यूलस आई डी टी, 0 से लेके टाइम तक टी तक, मैं किसी भी रेंज तक निकाल रहा हूँ, मतलब किसी भी टाइम टी तक निकाल रहा हूँ, 0 to t डी टी तक। मॉड्यूलस का जरूर ध्यान देना, मतलब मॉड्यूलस का मतलब है कि हम कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, तो इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे ही वी एवरेज, एवरेज वोल्टेज निकालोगे, ये वी वेलोसिटी नहीं है, ये ध्यान रखना इसका, तुम अभी भी ज्वाइन किए, ये वोल्टेज है। दिस इज इक्वल टू 0 से किसी टाइम पीरियड टी तक मॉड्यूलस वी डी टी बाई 0 से लेकर टी तक टी टी। ये एवरेज निकालने के फॉर्मूले होते हैं। अब तुम ये समझ गए हो कि दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सिमिलर ही हैं, बस आई और वी का अंतर है, ठीक है। ऐसे ही मैं आरएमएस का भी लिख देता हूं, दिस इज फॉर एवरेज, आरएमएस ऑफ वी एंड आई। इसका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इसको, है ना, आई स्क्वायर डी टी बाई 0 to t डी टी, इसका रूट मीन स्क्वायर, रूट। अब तुम्हें समझ में आएगा कि इसको रूट मीन स्क्वायर ही क्यों कहते हैं। देखो, पहला है रूट, फिर मीन निकाला गया है, दिस होल थिंग इज नोन एज योर मीन। ये एवरेज को मीन ही बोलते हैं लोग, ये मीन निकालना होता है। ये रूट है, किसका निकाल रहे हैं, स्क्वायर का, रूट मीन स्क्वायर, ये रूट है, ये चीज आपकी मीन है, एवरेज निकाल रहे हो, और ये है आपका स्क्वायर, इसीलिए हम रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं इसको। क्लियर है, इसलिए हम रूट, अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग पता होना चाहिए कि ये चीज एक्चुअली बहुत ज्यादा, ये चीज थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट होती है। ये होता है। ऐसे ही ये तो करंट के लिए निकाल दिया अपन ने। अच्छा, फिर भी इसमें भी याद रखना कि ये मॉड्यूलस का स्क्वायर है। ऐसे ही वी आर एम एस निकालोगे, मैं टास्क देने वाला हूँ, कैलकुलेशन। तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके दोगे वैल्यू ऑफ
V average and I average for full cycle. V लेना, V is equal to V naught sin omega t, और I की जगह I लेना, I is equal to I naught sin omega t. तुम sin omega t लेके चलो, फर्क नहीं पड़ता cos ले लो या sin ले लो, पर तुम लोग sin omega t लेके चलो. फुल साइकिल मतलब t जो होगा तुम्हारा पूरा टाइम पीरियड तक, कैपिटल T तक जाओगे. कर सकते हो. फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, ऊपर वाला ये एवरेज भी एवरेज वाला, बस इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल के देना है. Sir, is the answer for current 0? No. Will you take modulus? Yes, I do. Then t by 2 to When t, we the sign. integrate I naught sin omega t from 0 to t, that is 0 to 2 pi by omega. So then we get cos 2 pi minus cos 0. That's Then that okay, is, but did you take negative? That I'm telling. See, when you integrate na 0 to t, modulus of I naught sin omega t dt by 0 to t dt. Here, this you have to be very careful here, because in the graph actually what happens, this becomes like this: 0 to t yes, by yes, 2 and t by 2 to t. And here, when you're taking mod x for x, because you have to take mod x, you have to divide it into two intervals, 0 to t by 2, it will be I naught sin omega t because it is positive, plus t by 2 to t. okay. You have to take negative because the graph is negative. So to make it positive, the function should be negative, minus I naught sin omega t, like this. No, you did not do it like this. That's why you are getting wrong answer. That's why you are getting 0. It will be t only. Calculate it and then tell me what you will get. Sir, I naught by pi. No, the value they are saying is 2 I naught by pi should be. Let's ask Richita. Richita, क्या आंसर आ रहा है? Richita Ashka, you
व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? नहीं तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा फिर। मुझे लगता है खुद ही सॉल्व करना। सी आई नॉट बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। T is already there, so I'll multiply T. 0 to T by 2 minus I naught by omega minus cos omega t. 0 to T by 2. Sorry, T by 2 to T. Minus I naught by T omega cos omega t by 2 minus cos 0 plus I naught by omega cos omega t minus cos omega t by 2 minus I naught by t omega. Let's put the values actually. Omega is equal to t is equal to 2 pi by omega is there. So omega t will be 2 pi minus I naught by 2 pi cos pi minus 1 plus, I have to multiply this also, I naught by 2 pi cos omega t is cos 2 pi minus cos pi. Yes, it came, I think. 4 I naught by 2 pi. Yes. So it will be I naught by pi. This part will be, because cos pi is minus 1, I naught by pi. Here again we have got I naught by 2 pi into 2, because cos pi is minus 1. So I naught by pi plus I naught by pi, we are getting 2 I naught by pi. This is the value of I average. Clear to everyone? मुझे पता है श्रीजिता इस समय डाउटफुल होगी कहाँ पे, बस श्रीजिता को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने t by 2 से लेके t वाले इंटरवल में माइनस क्यों लिया। श्रीजिता समझ में आया? आवाज बहुत कम आ रही है आज श्रीजिता, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। कुछ बोल रहे हो क्या? बहुत हल्की सी आई मुझे आवाज, बहुत हल्की सी। रहने दो, अगर नहीं आ रहा है तो मैसेज कर दो। अगर तुम्हें समझ में आया है ये वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ तब तो ठीक है, हाँ कर दो, यस सर समझ में आ गया, ओके। नहीं समझ में आया तो फिर बताओ, फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एक जगह पर जहां तुम्हें डाउट आ सकता है वो ये पॉइंट है। अशिका को डाउट नहीं आया होगा, आर्ची को भी डाउट नहीं आया होगा। अशिका बताओ। सॉरी अशिका नहीं, श्रीजिता। सर अभी सुनाई दे रहा है? हाँ बढ़िया, सुनाई दे रहा है, एकदम बढ़िया। हाँ। वो मुझे एक्चुअली इसको करने में बहुत टाइम लग गया, जो डिफरेंट इंटीग्रेशन। तुम्हें ये समझ में आया कि मैंने माइनस क्यों दिया यहाँ पे? हाँ लाइक वो समझ आ गया, क्योंकि देखो मॉड एक्स इस तरह से डिफाइन होता है,
is equal to x when x is greater than or equal to 0. It is minus x when x is less than 0. हाँ अब वो समझ आएगा, मुझे एक्चुअली उसमें बहुत टाइम लग गया इंटीग्रेट करने में पूरा। अच्छा, तब ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग मैथ्स पढ़ते हैं और तुम मैथ्स नहीं पढ़ते हो क्योंकि तुम नीट वाले हो, तो ये मैंने एक्सपेक्ट किया था। अगर नहीं है इसमें डाउट, ये क्लियर है, बेसिक बेसिक क्लियर है, तो फिर बढ़िया है। जैसे अपन लोगों ने आई एवरेज निकाला ना 2I0/π, in the similar way we can find v average. This is 2V0/π. The only difference is you have to put v as v0 sin omega t in place of this. V average is equal to integration mod v0 sin omega t dt by 0 to t dt. This is how you do it. Okay, in the same way, everything is same. You have to divide it into two intervals, 0 to t by 2 v0 sin omega t dt plus t by 2 to t minus v0 sin omega t dt. Same thing, divided by t. Okay. Acha, now this is okay. Now you try to calculate the RMS value. Same way, either you have done for I, na? Similarly you do for IRMS. Formula is your root over 0 to time period I square dt divided by 0 to t dt. I you will take as I is equal to I0 sin omega t. Keep on integrating. यहाँ पर अगेन देखते हैं फिर तुम्हें प्रॉब्लम आता है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पर भी इंटीग्रेशन की थोड़ी सी हायर नॉलेज चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे इंटीग्रेट करते हो, कहीं अटक जाओ तो मुझे बता देना। So the answer comes as I naught by root 2. हाँ करेक्ट, I नॉट बाई रूट 2, वेरी गुड। IRMS is equal to I naught by root 2. Let's wait for them also, they are getting or not. Similarly, VRMS you should get as V naught by root 2.
तो हम्म, मेरा भी सेम आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, हाँ। अश्का तुम्हारा आ रहा है? हाँ सर। आ गया, वेरी गुड। फिर ये करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसके बाद एक्चुअल चीजों पे आते हैं। फेसर्स। अब जब भी हम कोई भी सर्किट बनाते हैं ना, देखो जैसे जैसे तुम्हारे पास है ना ऐसे सर्किट्स आएंगे, कैपेसिटेंस वाला, इंडक्टर वाला, रेसिस्टेंस वाला। तो ऐसे मतलब ये पहले तो हम इंडिविजुअल सर्किट्स को एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद कंबाइंड सर्किट्स को एनालाइज करेंगे। उसमें होता क्या है कि जैसे इस अब ऑल्टरनेटिंग, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट को जो ना एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है। तुम नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर सकते जैसे अपन डीसी वाली करते हैं ना कैलकुलेशन, वो सेम टाइप की कैलकुलेशन यहाँ पर चलती नहीं है, फेल हो जाती है वाली चीज। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ट्रिक यूज करते हैं, मतलब हर चीज के लिए। जैसे अगर मैंने मतलब एक फेसर वाली एक ट्रिक होती है जिससे हम एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो करंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुम्हें, करंट वेक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन टोटली वेक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, एक टेंसर की तरह बिहेव करता है, हाफ वेक्टर हाफ स्केलर। तो इसकी एक टेक्निक होती है मतलब फेसर बनाने वाली, जिसमें अपन फेसर क्या करते हैं कि जब अपन किसी द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस या फिर इंडक्टर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हम उसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमने वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया तो रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हम उसको जब एडिशन करेंगे ना दो वोल्टेजेस को या दो करंट को, तो फिर हम उसको वेक्टोरियली ऐड कर पाएंगे रिजल्टेंट निकाल के, तो उससे हमारे पास रिजल्टेंट करंट या रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, ये होती है कहानी। वैसे फेसर्स ड्रॉ करने के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो। अब मैं बताता हूँ फेसर्स ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास रेसिस्टेंस का सर्किट है, ये लगता है थोड़ा फीवर आने वाला है, बॉडी थोड़ी कर रही है। ये जो साइन साइन का सिंबल बताया ना मैंने, ये उसका सिंबल है, ये देने वाला मतलब करंट वाला, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो करंट तुम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रहे हो, यहां से जब करंट करंट तो सेम ही जाएगा सीरीज में, करंट जितना पास किया उतना ही तो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस जो आर होगा वी आर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू आर। ये लॉ तो फॉलो होती है, ओम्स लॉ, डीसी और एसी दोनों के लिए। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर हो गया। तो वोल्टेज अक्रॉस जो रेसिस्टर हुआ आई नॉट आर साइन ओमेगा टी हो गया। तो आप एक्चुअली वी नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, हम तो बस यही चाहते हैं। अब इसका फेसर कैसे ड्रॉ करेंगे, फेसर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एंगल वाली एक्सेस होती है और ये हमारी वोल्टेज या करंट वाली एक्सेस होती है। अब जैसे मैंने फेसर ड्रॉ किया वोल्टेज का, तो ये जो लेंथ आप देख रहे हो ना, ये वाला दिस लेंथ, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसको हम इसकी लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज आई नॉट आर। और ये जो एंगल होता है दिस ओमेगा टी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंगल। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द वोल्टेज ऑफ ए
voltage across a resistor, and this is how we represent the phasor. ठीक है? समझ में आ गया? दूसरा फिर बताते हैं, फॉर रेसिस्टर अपन ने वोल्टेज दिखा दिया, करंट भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे अगर तुम लोग चाहो तो। करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो आई नॉट होगी, ये जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ। So then V naught by R. If voltage is given, it will be V naught by R. But since only current is there, so you can represent current this length as I naught. Okay, na? Now coming for the capacitor. Capacitor circuit is this one. This is your capacitor plus Q minus Q. I is equal to I naught sin omega t is there. So first, if you want to draw the voltage, V is equal to Q by C. I is given to us. So first we need to find out what Q, because Q is unknown to us. So I is equal to I naught sin omega t is there. I is dq by dt. Try integrating it. So dq will be equal to your I naught sin omega t dt. Now integrate it from 0 to t. It will be q is equal to I naught by omega cos omega t. Minus will come outside. 0 to t. Actually, one thing you should remember here, when we are doing it minus I naught by omega, actually the answer you should get is cos omega t minus 1. But we are not actually, when we are drawing phasors now, we are not concerned with this constant value. So we usually omit it. Minus I naught by omega cos omega t. Because you should be knowing when we are drawing the Q, one constant is added, either the graph will go somewhat up or somewhat down, but we are not concerned with that because we will actually shifting of up or shifting of down, that doesn't matter. Actually we have to find out the resultant. That's why we usually omit the constants. Okay, now this value can be written as I naught by omega sine of what? Cos minus cos omega. Sine pi by 2 minus omega is what? You can write it as minus omega t minus pi by 2, na? Because minus will come outside, sine of pi by 2 minus omega t is positive cos omega t. It's correct. Sine naught by omega, sine omega t minus pi by 2 I can write. So in that case, and this is Q. Now if I want VC, it will be Q by C. So it will be I naught by omega C sine of omega t minus pi by 2. Now what is the meaning of this? This voltage we have got. This is the voltage across the capacitor. Now if we try to draw the phasor of this, this was your original. Let me draw the original voltage, or this was omega t for the current. This was current. Now if
this will be your voltage across the capacitor. What is its value, its length? It is I naught by omega c, and it is lagging by the angle of 90 degree. You have to go up by omega t and then you have to come down pi by t, pi by 2. So if you take the reference, the voltage V is equal to V naught sine omega t, if you take, or I naught R, so sine omega t you have taken, this voltage across the resistance, then the capacitor's voltage will be like this, lagging. Understood? In the similar way, can you tell me how you will find out for capacitor voltage across the inductor? How it will be? The way we have drawn the this one, the way we have drawn the phasors of capacitor, how will we draw the phasor for the inductor? So you can use V is equal to L di dt. L di by dt. That you can use. Draw and then tell me how it will be. In the similar way, see, one more thing before that, can you tell me if current for this, for resistance, I have drawn the voltage, but I have not drawn the current one. Na? If I draw for current, how the phasor will be? For current, remember when we are trying to find out the current, the supply thing is voltage. This is R. When you supply, you supply the voltage. V is equal to V naught sine omega t. So obviously I will be what? V naught sine omega t by R. Na? So in that case, if someone asks you to draw the current phasor for the resistor, it will be like the same direction only. The value will be, this is I versus T, and this value will be V naught by R. Angle is omega t. In the same way, my question is, I have done the voltage calculation for the capacitor. Can you find out the current across the capacitor? For this, you have to assume voltages across the capacitor is V is equal to V naught sine omega t. Now try to find out the current. Draw the phasor. First do this one, then do same things for inductor and all.
what I am doing, I am solving it. So the length is CV naught by omega and the graph is in the second quadrant. Means it leads, current leads, na? Yes, leads. Means pi by 2 plus omega t. I will be dq by dt, and it will be CV naught omega cos omega t, and it can be written as CV naught omega sine of omega t plus pi by 2. Second current is positive, na? So the current phasor will be like this. This is pi by 2, and the value is CV naught omega. So from this, what you can infer, na? Voltage across capacitor, this thing, if you remember, it becomes very easy for you. Lags by an angle pi by 2, and current across a capacitor leads by an angle pi by 2. Now do the same thing for what? Inductor. So for the inductor, it comes to be V is equal to Li naught omega sine omega t plus pi by 2. Here also it leads for the It leads, voltage. correct. Voltage The volt. across inductor. Very good. Current? What about current? Do it for Yes, current yes, finding. also. Actually, the whole alternating current, na, that depends on this only. After this, you will have to find out the resultant only. I'll tell you that thing also. In case of current, it is V naught by omega L cos of omega t minus pi by 2. In this case, it trails. It trails. Correct. So why I'm getting different thing?
why I'm taking this negative? Yes, sir. It should be only the formula L without the behaving. negative sign. Yes. See, this is V. So the voltage will be like this. Sita, you are able to do this one? Everything? We'll try to finish this one, the current across the inductor also. And then in the next class, I'll tell you how to add the phasors, and then we'll start solving the question on this. Achha, one more thing, one more very important thing that I did not tell you till now. When you're considering these things, now, we actually do what? We actually do what? We compare this with resistance. Capacitor and everything you have seen now, we compare this with the resistance. So actually, when I have written this VC, if you write it as I naught into RC resistance, that we usually write it as XC. XC here becomes 1 by omega C. What this XC represents, XC is known as the impedance. Impedance is nothing but resistance. Means when you represent this capacitor with a value of resistance, with a certain value of resistance, the value of resistance that you need to put in place of this capacitor will be 1 by omega C. So this thing actually, this XC behaves like the
resistance then. Capacitor, the impedance of capacitor is 1 by omega c. Similarly, if you try to see here, VL is equal to I naught into RL pi by 2 plus omega t. This RL is resistance, but we write it as XL. XL is equal to L omega. This is again, if we represent this inductor with a resistance, the resistance of that inductor will be L omega. This is known as the impedance of, in an alternating current, in an alternating circuit, resistances are written as impedance. Okay, these are the things. Here let me write current across inductor lags by an angle pi by 2. After the class, just try to analyze it, because next class I'll show you how to add these vectors. It's simple only. You have to just add these vectors like you add the vectors, like you add the vectors, not taking resultant and all, resolving them like that. Like that only you have to do. And then that knowledge, that adding of vectors in that case will help you to find out series or solve series or parallel circuits in alternating current. Okay, let's end it.